सॉल्टीला म्हणतात खारट, बरं का. सॉल्टीला म्हणतात खारट, इम्प्युअरला म्हणतात गढूळ आणि प्युअरला म्हणतात सात्विक. तर सरांनो, सॉल्टीला म्हणतात खारट, इम्प्युअरला म्हणतात गढूळ आणि प्युअरला म्हणतात सात्विक. ड्रम्स वाजवतो शालूम भैया, गिटारचं बघतो तेहेल आणि इंग्लिश मध्ये गाणी गातो ऋत्विक. ऋत्विक दादा नमस्कार. ऋत्विक दादा नमस्कार सर. तर कशी वाटली सर कविता? वेगळाच विडा उचललाय कविता लेखनाचा आणि रोज काहीतरी नवीन प्रोड्यूस करण्याचा प्रयत्न करतोय. तर आज तुमच्यावर शेवट केला म्हणजे सात्विक आणि ऋत्विक यमक कसं वाटतं? थँक्यू मस्त आहे. हरकत नाही सर. बेसिकली सर तुम्हाला प्रश्न विचारायच्या आधी तुमच्या या घरट्याचं सर विशेष कौतुक सर. म्हणजे असं आम्हाला रिसर्च टीमने सांगितलंय की तुमच्या केसांमध्ये हात टाकला तर 2-3 पक्षाची अंडी सापडतील. तर म्हणजे फारच हे तुमची स्टॉईल पक्षाची अंडी सापडतील आणि हात नाही सापडणार. ऋत्विक दादा, पहिला प्रश्न तुझ्यासाठी असा आहे की म्हणजे मी सावजला नव्हतो, पण मला सावज मधला काही गोष्टी कळाल्या तुझ्याबद्दल. म्हणजे आम्हाला रिसर्च टीमने सांगितल्या किंवा म्हणजे प्रत्येक स्टेजच्या आधी किंवा मग प्रॅक्टिस वगैरे झाल्यावर तू पाठ पराडकर आणि तेजस दादा असे तिघं कुठेतरी जायचे लपून हळूच आणि कुठेतरी गाडीमध्ये वगैरे तुम्ही जायचे बेसिकली. तर काय नेमकं काय करायचे, कशासाठी जायचे तुम्ही? आता तुला काय सांगू मी? काय बरोबर आहे. ते कुठल्या गाण्याची प्रॅक्टिस करत होता आज जाऊन? का गाणी वेगवेगळी म्हणजे काय गाडीत बसून तर आम्ही काय करायचो, आम्ही गाडीत बसून गाणी ऐकायचो. नवीन कंपोजिशन साठी तुम्ही रिसर्च करायचे बेसिकली, इन्स्पिरेशन बेसिकली. त्यासाठी मला वाटतं नवीन इन्स्पिरेशन किंवा रिसर्च साठी माइंड आपलं खूप स्टेबल हवं असतं. मग त्यासाठी तुम्ही काहीतरी करत असाल तिथे? खूप जास्त नाही, काही नाही, चुपचाप बसायचं, जास्त बोलायचं नाही, आवाज करायचा नाही मेन म्हणजे. आणि आवाज केला की इन्स्पिरेशनचा जरा प्रॉब्लेम होतो. पण आवाज केला नाही, चुपचाप दूर जाऊन बसलं की चांगले आयडिया सुचतात. हो, नाईस चांगलं आहे. म्हणजे हेच आम्हाला हेच सांगितलं होतं की असंच तुम्ही रिसर्च करतात, बाकी आम्हाला काही असं वेगळं नव्हतं सांगितलं. आरोप होता बेसिकली की तू ट्रिपल शफल मध्ये बेसिकली फक्त इंग्रजी गाणी गातोस, मराठी गाणी का गात नाहीस. आणि आमच्या सोनल नगर मध्ये जालन्याचा आमचा एक मंडळ आहे, सोनल नगर युवा महोत्सव आम्ही करतो, तिथे तुझ्या ट्रिपल शफलचा मराठीमध्ये गीत करायचा होता. जालना युवा महोत्सव मध्ये ऋत्विक दादांचं स्वागत स्वागत स्वागत. वा 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 दादा वा वा. कलुळाचं पाणी कशाला ढवळीले, नागाच्या पिल्याला तू काग ढवळीले. कलुळाचं पाणी कशाला ढवळीले. त्या शिट्ट्या टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजे, शिट्ट्या टाळ्या. अरे कसं आहे माहितीये का, माझी मराठी वोकॅब्युलरी ते तो आता पण सांगू शकशील की इट इज नॉट व्हेरी गुड. तो मला इंग्लिश मध्येच लिहिता येतं. सॉंग रायटिंग मी करतो ना ते मला फक्त इंग्लिश मध्ये जमतं, मला हिंदी किंवा मराठीमध्ये जमत नाही. आणि जरी जमलं तरी आय वोंट बी एबल टू डू जस्टिस टू द लँग्वेज इन विच आय एम रायटिंग. अँड दॅट्स वाय आय डोंट सिंग ऑर राईट इन दोज लँग्वेज. पण हो, ट्राय करायला काही हरकत नाही नवीन काहीतरी. गणपतीची गाणी तुझ्या आवाजात सर आम्ही पुढे तुला एक फरमाईश देणारच आहोत. पण गणपती आमच्या जो गल्लीतला आहे, आमचे जे गल्लीतली पोरं आहेत बारकी ते फक्त हेच म्हणतात की ऋत्विक दादालाच बोलवायचं आहे, तर तुला यावंच लागेल. जेव्हा कोरोना संपेल आम्ही तुला नक्की बोलू. तर जालन्या युवा महोत्सव मध्ये ट्रिपल शफलचा एक शो आपण नक्की आयोजित करू शकतो. हे बघ, कोरोना संपल्यानंतर मी कुठेही यायला तयार आहे. तहल, आपको हिंदी में सवाल पूछना है क्या मराठी में चलेगा आपको, मतलब या मिक्स चलेगा? नहीं भाई, हिंदी में पूछ ले. अच्छा चलो, हिंदी में पूछता हूँ आपको सवाल कि बेसिकली अपन जो अपना फिरोदिया का नाटक रहता है उसमें अपन स्टार्टिंग में एक सर्कल लेते हैं, मतलब डायरेक्टर सर्कल लेता है, उसमें वो स्टोरी बताता है अपने को फिरोदिया की. तो हमको ऐसा पता चला है कि मतलब तहल को फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टोरी. Hello. Listen, Mr. Vasuli, they actually tried really very hard. But you know, because of some circumstances, they couldn't really arrange your cash. I hope you... समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा. समझ नहीं आती, मतलब स्टोरी के सर्कल में तहल ज्यादा ध्यान नहीं देता है और मतलब वो मतलब उसको स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, तो डायरेक्टर को खुद से उसको और एक बार स्टोरी बतानी पड़ती है. तो मतलब इस पे क्या कहना है? मतलब डायरेक्टर को पहले ही बहुत काम रहते हैं और उसमें से और एक काम आता है कि तहल को स्टोरी अपने को समझानी है. तो आपको क्या कहना है इस पे? See, first thing, I'll reply in English. Is that okay? हाँ, चलेगा. ठीक है. First thing is this has been going on since second year.
तो सेकंड ईयर से मैंने कभी पूरी स्टोरी सर्कल में कभी सुनी नहीं, फॉर वन ऑफ द अदर रीजन. आई प्रॉब्ली वाजंट देयर एट द टाइम. आई वाज प्रॉब्ली इन ओमान मोस्ट ऑफ द टाइम, सो आई हैड टू कम बैक एंड then people were like, chal story bata diye. I'm like what is the story bro, bata na. So then it's not always a director, okay, because this year I didn't listen to the story again, and then Nachiki used to always come and check up on me like, bro tu story suna kya? I was like, ha na bro. And then during music during the practice and all, Shalom used to say something, then Path used to say something, Pratik would add in, and then like over 1 month then I got like the entire story. Like it took 1 month for me to understand what the story was. कोई बात नहीं, मतलब आपको स्टोरी बार बार सुनाने से डायरेक्टर का स्टोरी और अच्छा हो जाता है, उसके दिमाग में फिट हो जाता है. बेसिकली आप सोशल वर्क करते हो, ऐसा हमको समझ में आया है. का अगला सवाल बेसिकली रिसर्च टीम हमारी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, तो ये सवाल रिसर्च टीम से है आपके लिए कि हमने सुना है कि ओमान में आपकी कोई तो भी तेल की खदान है, तेल का कुआं है आपका, और वो तेल के कुएं की वजह से ही आपका नाम तेल से तहल और तहल का, तो ये वो तेल से जो आपका नाता है बेसिकली तहल, इसके बारे में क्या कहो? That's no relation, किसने बोला? सर रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है, आप भी बताओगे नहीं तो हमको पता ही चलेगा कि आप पे कितने तेल की खदानें हैं, कितने कुएं हैं, बहुत सारा आपको पैसा आता है, और उसी के वजह से कोई तो भी आपको ऑयल मनी बोल के चिढ़ाता था. अरे दोनों यही ग्रुप है, बहुत है. तो उसके बारे में कुछ बताओ. देखो अभी कैसा बोलूं, इट्स लाइक आई कांट टेक माय वेल्थ ना, नहीं तो रहने नहीं देंगे अभी इधर. अरे ये तेरी टेप पे टेप ले. 1000 रुपया टेप पे चल. 1000 रुपया टिप. चाय के पैसे बाद में दूंगा, चल. थैंक यू साहब. अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में. एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है. 25 दिन में पैसा डबल. 25 दिन में पैसा डबल. हमको ऐसा पता चला कि आप बेसिकली नागपुर से हो, बाद में आप ओमान गए. हाँ, so no, I was born in Oman because my mom used to work over there and my dad was with my mom. Then because of some troubles we had to come back when I was in first and second. So I did my first and second in Nagpur. Then again when I was just moving to third I went back to Oman. Then I was there till 12th. So that's how. शलोम दादा नमस्कार. शलोम दादा ऑन द डांस फ्लोर. शलोम दादा नमस्कार. आपसे सवाल पूछने के लिए ये सीरीज शुरू की है शलोम. बहुत ज्यादा सवाल है आपके लिए. तो सबसे पहला सवाल ये है शलोम, हमने सुना है कि आप यूपी में कोई तो भी फेस्ट था और उसमें आप जज बोलकर गए. हाँ, जज बोलकर आप गए थे, तो कितना मजा आया खुद के ही बैंड को जज करके? अरे वैसे नहीं है, इनफैक्ट आई रिप्लाई इन इंग्लिश. इट्स ओके ना, इंग्लिश और हिंदी ठीक है ना. तो क्या हुआ था ना, एक्चुअली इनफैक्ट आई हैड प्लान्ड टू एंटर द कंपटीशन विद विकल्प in location. I didn't know. Ready? No, I'm serious. So I told the guys at Amritans, I'm sorry boss, I can't do it with you all because I've already committed to my guys. तो हम लोग प्लान कर रहे थे, बट सीन क्या हुआ था कि वो अमृतांश वाले ने मेरे को बोला था कि we'll be shooting that video. ठीक है, जो COET में हमारा शो था ना, जजिंग के बाद, कंपटीशन के बाद, they said that we'll be shooting it and we'll be shooting it for our upcoming album. तो वो सुन के मेरी फट गई, because it's for the album and I have to be on the album, no, because I'm playing drums on the album. उसकी वजह से unfortunately I had to ditch my guys. बदल लिया साला. But still, I mean, the answer to your question, judging अपने लोग obviously they were really good. It was a good experience getting in few juniors also. So sadly we couldn't win that competition, but that's okay. नहीं, पर सबसे ज्यादा शालोम भैया पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा किसको जज किया आपने? Yeah, I would say Pratik and Parth, honestly. Okay. for different reasons, for their singing and a lot of other reasons also. But yeah, that's the answer to your question. कि मतलब एक स्टोरी थी, हमें नचिकेत ने बताई थी, नचिकेत कुलकर्णी ने एक स्टोरी बताई थी. एक बार आप और नचिकेत इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में खड़े थे और कुछ तो भी बात वगैरह कर रहे थे और आप बाद में चले गए किधर तो भी आपके क्लास में वगैरह. तो नचिकेत को ऐसे सब लड़कियों ने घेर लिया कि वो शालोम के दोस्त हो गए. आप शालोम ने क्या कहा आपसे, मतलब हमें भी शालोम से दोस्ती कर दिया वगैरह वगैरह, सब बहुत वो नचिकेत को
बोल रही थी लड़कियां, तो ये सिर्फ केमिकल का नहीं, तो ये बाकी डिपार्टमेंट का भी है कि कॉम ENTC की भी लड़कियां सब आपके पीछे है, ऐसा हमको पता चला है. क्या बात भाऊ जे मला माहित नाही ते सांगा. कर रहे हैं? हाँ. ENT के यूनिवर्सल क्रश है, ऐसा पता चला है हमको. Shalom is like, tell me something new. I already know this. Tell me something new. No, I mean, see, अरे honestly, I've only heard rumors. मेरे को मतलब I don't know if this is true or not. In fact, you've got better studs than me in Tehel and Ritik. I'm pretty sure they'll be Stop getting being most of so the attention. modest, But Don't be so modest, dude. It's okay. बट तहल का सबको पता है ना, Tehel तहल का सबको पता है कि उसका कुछ मतलब है, Exactly. मतलब सबको ऐसा लगता है कि शलोम है, अभी भी सिंगल है शलोम, इसीलिए वो है सिंगल है, but नहीं, I mean, see, obviously it's a good thing if people show some interest in you. I'm very happy about that. But मेरे को नहीं मालूम करे ये सब. ENTC से भी लोग थे. In fact, I think your research team is making that up. हम लड़कियां हमसे दोस्ती करती है क्योंकि हम विकल्प में है और शलोम विकल्प में है, इसलिए. I don't believe it. That's good. I mean, I'm honored. I'm really happy to know that. But honestly speaking, I have not interacted with a lot of such people. इनसे इतना बात नहीं हुआ था मेरा. Like very few people came up to me saying that. But I'm happy. I'm really honored. Stop lying. और क्या पता है? So many people have come up to you. शलोम भैया Shut up, आपने dude. डिप्लोमेसी का अगर आप आए हो, ऐसा लग रहा है. शलोम भैया बहुत ही डिप्लोमेटिक, बहुत ही ऐसे बुरे आंसर्स दे रहे हैं, पर ठीक है शलोम भैया, हम आपको माफ करते Yeah, हैं. come on यार. आई गेस तहल को शलोम के बारे में बहुत पता है, मतलब तहल को मेरे को भी बहुत मालूम है शलोम के बारे में. हमारे बेसिकली हमारा जो एपिसोड रहता है उसमें एक हम फरमाइश राउंड रखते हैं, फरमाइश राउंड. तो आज की फरमाइश आपके लिए है, तहल के लिए. तो मेमोइड्स में एक गाना था तहल, कदम नाम का, तो जो शो में हुआ नहीं, और अगर वो शो में हुआ होता तो मतलब मेरे भी आगे के डायलॉग्स वगैरह हुए होते. तो तहल मैं आपको वो मेमोरी रिक्रिएट करने का एक चांस दे रहा हूँ. आप एक बार यहाँ पे कदम गा के सुनाए, सबकी I इच्छा think होगी. all of us, it was him because I remember seeing his face Yeah. after the song was not done and he was so confused and he didn't quite know what had happened. He was looking at me and I'm like, dude, I'm sorry, but the song is canned, and he was so mad. Yeah. No, dude, I'll tell you what happened during that moment. So there's a specific drum beat, then after a certain number of bars I was supposed to sing, right? So I was just going to sing the first word and then I see Dhananjay running across the stage. It's like, what is going on? Yeah, and I was playing the bass and I was just coming, Yeah, I was supposed to come in after he started singing and I was just about to play and I'm so thankful that I did not, because I would have looked like a dick if I did. Just play that one note and got off. गा के सुनाओ फिर एक बार कदम. मैं कदम कदम बदलता हूँ यही. बहुत ही बढ़िया. मतलब आपको वहां पर भी गाने को नहीं मिला, अभी हम आपको यहाँ पर चांस दे रहे हैं, फिर भी आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हो. मतलब बेसिकली ये गाना होना ही नहीं था, ये गाना कहीं पर भी होना नहीं था. ये तो हमको समझ में आ गई अभी. तो इस शो का सेगमेंट है मेमोरीज या मेमोरीज. मतलब मेमोरीज की कुछ मेमोरीज हम यहाँ पर रिक्रिएट करने वाले हैं. तो सबसे पहले ऋत्विक, आपको सवाल था, तुला प्रश्न होता ऋत्विक पहिला की हा प्रश्न होता की जर मेमोरीजच्या प्रोसेसमध्ये आम्ही बापतला या प्रश्न विचारला, तुलाही विचारतो की मेमोरीजच्या प्रोसेसमध्ये जर तुला डायरेक्टर बनवलं असतं, नाटकाचा दिग्दर्शक जर तू असला असतास, तर काय मेजर चेंजेस केले असतेस प्रोसेसमध्ये? 2-3 चेंजेस काय सांगते? Yeah, major changes manje, see, I don't think I am qualified enough to answer this question, but in order to answer it, because you've asked me this question, I feel like we would have practiced a lot more, because till the very end, if you remember, from start to finish आपण नाटक खूप वेळा नव्हतं केलं before the competition day, आणि I don't think it was clear in anybody's head as to what was supposed to come after what. It was not very concrete as to what was supposed to happen. So, and execution then in that case it came in. Dance का fuck up झाला, आपला projector चा fuck up झाला. And I feel as an engineering college, technically we should be more sound than art colleges and other colleges. So that is something that I would have tried
to pay my attention at. Maybe it's difficult. That's why maybe it was not done. I'm not sure as to how that happened. But as a third person, as an outsider, I felt like if we would have practiced more, it would have definitely shown and we would have gone ahead. नेक्स्ट क्वेश्चन तहल आपको है। तो बेसिकली हमको ऐसा पता चला है कि आप इसके पहले इधर तो भी जाके सो जाते हो, मतलब कौन सा तो भी कोना पकड़ते हो, कौन सी तो भी चेयर पकड़ते हो ऑडी की और चुपके से सो जाते हो, और फिर सब सेक्शन को सब बाकी सेक्शन को भी ढूंढना पड़ता है कि तहल बेसिकली गया किधर, तो तहल को उठाना पड़ता है जाके और फिर तहल आता है स्टेज करने के लिए। That used to only happen in first year. Very liar. नहीं, ये हमने नाच में भी ऑब्जर्व किया था। No, I used to see what reason do I have for this? I'm not giving any reason for this. I used to honestly I'll tell you, my management at the time isn't very great. Okay, so we used to do like an entire stretch, and then we'll do an entire night, and we'll do maybe around morning we'll go back, and then I'll just doze off because we'd be up till 3 or 4, which was it was good to practice till 4, but then it takes a toll on you afterward. Obviously, we are the music section, and I wouldn't say we are doing we are the hardest workers in the entire team, because there are pages and there are people dancing and whatnot, and there are people acting and all sorts. But still, then it would take a toll on me, and then I just go home and sleep. And then I used to purposely put the phone on silent so that I wouldn't get anybody's call. So then, और एक था कि आप मतलब विंग में आप एक चेयर सेट करते हो आपकी, और प्रॉपर मतलब पूरी प्रोसेस आप वो चेयर पे ही रहते हो, मतलब उधर से हिलते नहीं हो ज्यादा। अरे bro, that was my this year was my 3rd year, and then I was like, I'm not going to stand here now. What's backache? I was like, 4th year. Master, even in our 2nd year, you used to do the same thing. Yeah, bloody dog. No. But then this year I created a throne for myself. You guys notice? People put a chair on it. I think I've fallen asleep over there also. Yeah, because it was even more comfortable, right? It was even more comfy, that's why. Yeah. पण अगला सवाल मेरा उनसे है। शलोम, आवाज आ रही है शलोम? हाँ, बोलो। तो शलोम भैया, आपसे ये सवाल था, बेसिकली हमने सुना है कि आप चाटी दादा पाठक जो थे हमारे, उसको आप भेजते थे नीचे स्टेज के बीच में, वड़ा पाव लाओ, साबूदाना खिचड़ी लाओ, और वो अकेला ही आप खा लेते थे, हमको कुछ भी मिलता नहीं था। भारतर मतलब बाद में वो वड़ा पाव का सुगंध आता था, पर वड़ा पाव आपने कभी हमारे साथ शेयर नहीं किया, अकेले खाते थे, तो ये गलत किया। He used to eat my vada pav. Hey, come on. This is going on YouTube. Stop lying here. What year is this? I don't remember this. This was this year, man. Achha. So I'll tell you, like Prathamesh or Atharva, I think you got your facts wrong. I used to not eat alone. ठीक है, मैंने मतलब हम पूरा म्यूजिक सेक्शन साथ में ही खाते थे। Chatty used to go and buy for all of us, तो हम लोग साथ में खाते थे। मैं अकेला नहीं खाता था यार। Come on, और ये तहल पक रहा है। Tehel does not seem to believe you. निखिल और पार्थ को पूछ, निखिल, पार्थ और मैं हम खाते थे, बट हम प्रतीक के लिए छोड़ते थे, प्रतीक के लिए एक आधा बाइट छोड़ते थे, अभिलाष के लिए एक छोड़ते थे। तो ये हमको ये निखिल और पार्थ ने बताया था, वो कट किया था हमने। अरे नहीं भाई, चाटी पाठक जो है, चाटी पाठक, वो आपको डैडी बोलता है, डैडी। डैडी हो आप, ये डैडी नहीं, तो ये डैडी जो है ना, ये एक्चुअली सुमन से आया है, ठीक है। एंड सुमन ही इज गॉट अ वेरी वियर्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स, तो उसने स्टार्ट किया पूरा डैडी करके टर्म, बट नहीं रहे, मतलब ये प्रतीक कुछ भी बोलता है, मतलब पागल है। ही स्टार्टेड ये और वो पूरा वगैरह। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बाकी अपन ऐसे रैंडम क्वेश्चन थे कुछ तो भी, वो अभी पूछूंगा मैं। तो पहला शलोम से है कि शलोम अमृतांश या विकल्प एनी डे, इजी पीसी। और एक था शलोम मेमोइड की नाच। Personally, on a personal point of view, memoirs, because the main reason being कि memoirs में we were allowed to order food रात नाज में bloody hell that didn't happen. शलोम ने मतलब आंसर अच्छा दिया, लेकिन बाद में एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कवर कर दिया कि सिर्फ खाने की चीज की वजह से मेमोइड चूज किया। तर पुढचा प्रश्न ऋत्विक दादा। नमस्कार ऋत्विक दादा ऑन द डान्स फ्लोअर।
ऋत्विक Yes, sir. म्हणजे असं आम्हाला कळालं आहे ऋत्विक की तू सावसच्या प्रोसेसमध्ये कोणीतरी आजारी आहेस म्हणून तू गर्लफ्रेंडला भेटायला जायचास, हे कितपत खरं आहे? हे खरं आहे ना. This happened What? a lot of times. Someone falling in Yeah. love happened. It happened even on my birthday, remember? Yeah. And you were wondering, bloody hell. you guys were involved. So I think the music section knew. I think even the director knew, dude. I just think other than the director and the music section, no one knew. तर आता आम्हाला कळाले म्हणजे आता सगळ्यांनाच कळाले. तहेल आपके लिए एक सवाल था कि कदम या कितनी बातें. Depends. Kitni Baatein was very beautifully sung by Parth and forgetting her name. Bloody hell, bullshit hell, Madhuri. कॉन्ट्रोवर्सी झालेली आहे सर, जी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करायची होती ती आम्ही करून टाकली. इसको कट करके डालना, ठीक है. नाही, हे कट नाही होणार सर. Kitni Baatein was sung by Kitni Baatein was sung by Parth and Madhuri, which I knew. The thing was ki the song was first of all the song itself was very beautiful when we heard it for the first time, and then the way they both sang it was like it was much better than Kadam, to be honest, because honestly in the end Kitni Baatein got done, right, and many people love Kitni Baatein. तर प्रत्येकाला एक एक स्पॉन्सर म्हणजे आपण म्हणजे गेस्ट नुसार आपण स्पॉन्सरच ठरवतो. तर आज तुम्ही तिघ जण स्टॉइलिश एकदम म्युझिक वाले एकदम प्रॉपर बँड बिंड म्हणजे ते असतं की स्टॉईल असते. त्यामुळे सर आजचे आपले स्पॉन्सर आहेत यार्डले परफ्यूम लंडन वाले. यार्डले परफ्यूम लंडन वाले आपले स्पॉन्सर आहेत. तर शॅलोन दादा, स्पॉन्सरचं नाव घ्यावं लागतं, तर तुम्हाला अशी ऍक्शन करायची आहे आणि वापरा परफ्यूम फक्त यार्डली लंडनचा आहे, वाक्य म्हणावं लागेल तुम्हाला. Let me try this. Yardley Perfume London. हे निर्विवाद वापरा. वा 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 वा. ऋत्विक दादा, तू येणार आहेस आमच्या गल्लीमध्ये, तू गीक करायला येणार आहेस. तर तुझ्या त्या खास शो साठी स्पॉन्सर आहेत कृष्णाजी पोहेवाले. आमचे हे रोजचे स्पॉन्सर असतात कृष्णाजी पोहेवाले. तर तुला यांची जाहिरात करायची आहे. खाऊ तो बस कृष्णाजी के पोहे, हे वाक्य तुला म्हणावं लागेल. हो तो बस कृष्णाजी के पोहे. अरे वा वा सर, थँक्यू सो मच. सावधच्या वेळेला ना मी आणि तेहेल वी स्पॉटेड अ वॉशरूम. आय थिंक तेहेल विल रिमेंबर दिस. And it was a girls' washroom that we used to go to. I don't know which. I think it was the second floor. आपल्या लाईन मध्ये. And all the girls knew that we were using that washroom. Like it was okay for us to use it. आणि I think only the two of us knew that we could go. आणि एकदा आणि आम्ही जायचो बिंदास आणि सगळ्यांना माहित होतं सो इट वॉज ओके. बट एकदा काय झालं, नाईट संपली आणि सकाळी 8 वाजता मी झोपेत होतो. मी झोपून उठलो आणि मी विसरलो की आता कॉलेज चालू झालंय, कारण फर्स्ट इयरचं कॉलेज 8 वाजता चालू व्हायचं. आणि मी जायला लागलो बिंदास 8 वाजता आणि फर्स्ट इयरच्या पोरी होत्या तिथे. आणि मी ऑलमोस्ट आतमध्ये गेलो आणि मी झोपत होतो फुल. मी ऑलमोस्ट आतमध्ये गेलो आणि मी एका मुलीला असं बघताना बघितलं माझ्याकडे. मग मला कळलं ओ शिट, सकाळ झाली, मी असं नाही करू शकत. भांडे होतील आम्ही जाते. Dude, I think I was told that we both went into that same toilet once, and it was sometime around the morning only. And then he goes out, and I'm still inside, like I'm still inside one of the booths, right? And then a girl walks in, and I'm like, shit. Yeah, so basically I stood there until I had to sit there until the girl left. Then they were peeing. मुझको